Hi, hello, welcome to Mohan Study Planet. Today I am going to tell you about present perfect tense. What does perfect means? It means anything that is completed, any action that is completed. कोई काम जो मुकम्मल हो चुका है, उसमें किसी भी किस्म की कमी मौजूद नहीं है, तो उसे हम परफेक्ट कहेंगे. टाइमिंग हमारे पास प्रेजेंट की है, तो इसलिए ये हमारे पास होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट्स सी द डेफिनेशन. The present perfect is used to indicate a link between the present and the past. The most confusing point कि ये present तो है, तो past से link किसे कर रहा है? Let's see with the example. आप किसी की शादी में गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर टेबल पर बैठे हो, खाना खा रहे हो. अब आपकी प्लेट में चिकन और राइस मौजूद है, ठीक है. अब कोई आपसे आके पूछता है, हे मिस्टर, डिड यू टेक द चिकन? तो आप क्या आंसर दोगे? आई हैव टेकन द चिकन. मैं चिकन ले चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि चिकन अभी भी आपकी प्लेट में मौजूद है. तो ऐसा एक्शन जो कंप्लीट भी हो चुका हो लेकिन अभी प्रेजेंट में हो, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. द टाइम ऑफ द एक्शन इज बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड. तो जो एक्शन का टाइम है वो कभी भी स्पेसिफाई नहीं होगा. एंड वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट देन इन द एक्शन इटसेल्फ. और हमें रिजल्ट से ज़्यादा मतलब होगा एज कम्पेयर टू एक्शंस. Present perfect tense. Now I am going to teach you present perfect tense in Urdu, and how we will recognize present perfect tense in Urdu and how we will translate it into English. इस टेंस के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है वगैरह लफ्ज़ आते हैं. इसमें ऐसा मालूम होता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है. रिमेंबर, चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है, ये अल्फाज आएंगे, ठीक है. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. बच्चा स्कूल चला गया है. अब बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? चाइल्ड. सब्जेक्ट सबसे पहले आना. फिर हमारे पास आएगा वर्ब. वर्ब गो है. स्कूल स्कूल होगा. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. द चाइल्ड हैज़ गॉन टू स्कूल. Till now we have discussed about the definition and the usages of the present perfect tense. Now I will tell you that how to make the example sentences or sentences for the present perfect tense. For this we have to learn about the formula. And the formula, we have first of all the subject. Then as it is the present perfect tense, so we have helping verb has, have. And the form of verb is third. And then we have object. Subject, have, has, helping verb, third form of verb, and then object. Let's learn with the help of the example. He has played football. With he, we use the helping verb has as it is singular. He has played football. Now we will discuss about the rules for the present perfect tense. We have three rules. Number 1, third form of verb is used in present perfect tense. Remember, third form of verb. Number 2, has, have, helping verbs are used. अब अगर हमने रिकॉग्नाइज करना हो कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमने दो चीज़ें देखनी है उसमें कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और क्या फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. नंबर 3, दिस टेंस डोंट टेल अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइम. कोई भी हमें स्पेसिफिक टाइम के बारे में ये टेंस नहीं बताएगा. जैसे एग्जैक्ट टाइम हो 3 बजे 4 बजे, तो वो हमें ये टेंस नहीं बताएगा. हेल्पिंग वर्ब्स. व्हाई डू वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब? अब ये क्वेश्चन आपके जहन में भी आता होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करते हैं. इंग्लिश ग्रामर के में हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हम रिकग्नाइज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं कि कौन सा ज़माना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग होता है. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़, हैव. हैज़ इज़ अ हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ विद सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है. अब सिंगुलर वर्ड्स में थर्ड पर्सन आ जाएगा और हमारे पास सिंगुलर नेम आ जाएंगे. हैव, वी यूज़ हैव विद प्लूरल वर्ड्स. अब इसकी एग्जांपल आ जाएगी दे, वी और एनी प्लूरल नेम. फॉर इंस्टेंस, आई हैव, दे हैव, वी हैव. As we have learned in every type of the sentence, we have 5 different sentences. Same as with the present perfect tense. We have 5 types of sentences. Number 1, simple or affirmative sentences.
Number 2, negative sentences. Number 3, interrogative sentences. Number 4, interrogative sentences. And number 5, WH questions. They are also called as the double interrogative sentences. And these sentences we use WH family. Number 1, simple or affirmative sentences. अब तक जितनी दफ़ा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फुल डिटेल से, अब तो आपको याद हो गया होगा कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देखे। Simple affirmative sentences are totally the simple sentences in which nothing is denied, nothing is asked. Let's see the formula. Subject plus have has plus third form of verb plus object. Example, I have written a letter. मैं खत लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। Number 2, he has learnt English. Number 2, negative sentences. In negative sentences, we deny someone, we dislike someone's opinion, or we are not agreeing with someone's opinion, so we deny them. We use not with the helping verb to make negative sentences. अब negative sentences को उर्दू में हम कहते हैं मनफी जुमले, जिसमें हम किसी चीज़ से मना करें, किसी काम से मना करें या किसी बात से मना करें, किसी की बात से एग्री ना करें, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट मेड केक। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ये चीज़ याद रखनी है। नंबर 2, दे हैव नॉट बॉट मिल्क। 3, interrogative sentences. Interrogative sentences are those in which we are asking a question or asking for help. ऐसे जुमले जिनमें हम सवाल कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे interrogative sentences। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे हैव हैज़, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हमेशा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जाम्पल, हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैं खत लिख चुका हूँ। हैव दे इम्प्लीमेंटेड रूल्स। Number 4, interrogative sentences. Interrogative sentences are the combination of the two different sentences. Number 1 is the interrogative sentence and number 2 is the negative sentence. Both interrogative and negative sentence come together at the same time. Formula, have has plus subject plus not plus third form of verb plus object. अब इसकी जो ईजी फॉर्मूला है ना, स्ट्रक्चर अगर हमने लर्न करना है तो ईजी स्ट्रक्चर है कि हम लोग जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है उसके स्टार्ट में हम हैव हैज़ यूज़ कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो ऐसे इंटेरोगेटिव में करना है हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, हैव दे नॉट implemented rules, last one, WH questions, also called as the double interrogative sentences. In these sentences we use the WH family, why, when, who, whom. Formula, WH family plus has, have, as it is the present perfect tense, so helping verbs are has, have, subject plus third form of verb plus object. अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, बस स्टार्ट में हमने वाई, व्हेन, हु, हुम एक्सेट्रा ये हमने स्टार्ट में लगा देना, तो हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही लर्नड इंग्लिश।
हैज़ ही लर्न इंग्लिश इंट्रोगेटिव था, स्टार्ट में वाई लगा दिया तो WH क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन हैज़ ही मेड चेंजेस।